Hello, good morning, students. I am Muhammad Tariq, PGT English, working with LBBM Senior Secondary School. Today, I am going to explain the last poem of Flamingo on Jennifer's Tigers. First of all, I would like to introduce you people with this poem. The introduction of this poem is Adrienne Rich. This poem has been written by Adrienne Rich in 1929, was born in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement इन कंटेम्पोरेरी विमेंस मूवमेंट एज अ पोइट। एज अ पोइट, एक पोइट के रूप में ये काफ़ी फेमस रही है। जो कंटेम्पोरेरी विमेंस मूवमेंट जो रहे हैं उसमें इसने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। एंड थियरिस्ट, शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। इन्होंने अपनी पोइम के 19 वॉल्यूम्स पब्लिश किए हैं। 3 collections of essays and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. अपने वर्क के थ्रू, with the help of her work, Adrienne Rich tried her best to raise her voice against the racism and militarism. Do you know racism? नस्लवाद और सैनिकवाद के खिलाफ इन्होंने जोरदार ढंग से अपने वर्क के थ्रू विरोध किया है। The poem on Jennifer's Tigers address the constraints married life, a woman's experience. In this poem, Adrienne Rich, the poet Adrienne Rich, very nicely expresses the feelings of a married woman. The married woman, especially how in her period, how the married women would be treated by the society, by the male chauvinism society. Hello students, now after the introductions, now let us start the poem. On Jennifer's Tigers prance across a screen. In this poem, on Jennifer embroidering her tigers on the screen. So the poet says that on Jennifer Tigers prance across a screen. Prance here means jump, especially jump with the help of rear legs, back legs. Bright topaz denizens of a world of green means the material, the thread which are being used to embroider the tigers, that is a very bright light topaz color. Topaz, a kind of precious stone which is generally found in the oceans. This is a precious stone, denizens. Denizens here means inhabitants. This word has been used for tigers of a world of green. World of green here refers to the forest. The poetess says that these tigers, having the color of bright topaz, inhabitants of a green of a forest, they do not fear the man beneath the tree. Now indicating the men who are standing under the trees, addressing as those men, Aunt Jennifer wants to say her tigers do not fear the man beneath the tree. This is a comment directly on the male-dominated society, patriarchal society. This man has able to control everything in its hand. Even she is trying to make a comment, seeing the man, saying that whether this man would be able to trap her tigers, would be able to tame her tigers. क्या ये इंसान उसके टाइगर्स को भी पालतू बना पाएगा जिसने कि हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। They pace. The next line is, that is why she says that they do not, they here refers to the tigers. Her tigers do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Sleek here means elegant, chivalric bravery, certainty means confidence. Which figure of speech? This is alliteration. Sleek chivalric certainty means the initial letters of same sounds are being repeated. They here refers to the tiger. So her tigers pace in sleek chivalric certainty, elegantly, bravely, confidently.
बिकॉज वेयर एवर दे डिज़ायर हर टाइगर्स कैन मूव, उसके टाइगर जहाँ चाहें खुले मन से, ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ घूम सकते हैं। In this poem, the poet uses the second line, bright topaz denizens of a world of green. This is a metaphor. And in the last line of the first stanza, they pace in sleek chivalric certainty. This is alliteration. I hope this stanza has been cleared. Now let us do the second stanza. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Fluttering here refers to what Aunt Jennifer is doing. Aunt Jennifer is embroidering her tigers. Find even the ivory needle hard to pull. Ivory here means the tusk of elephant. हाथी के दांत की बनी हुई सलाइयाँ, जो निडल, जो सलाइयाँ वो यूज़ कर रही है वो किसकी बनी हुई हैं? हाथी के दांत की। दे आर वेरी प्रीशियस, बहुत ही कीमती हैं। उसके कहने का पर्पस क्या है कि उसने आइवरी निडल को यहाँ यूज़ क्यों किया गया है? इट मीन्स आंट जेनिफर बिलोंग्स टू एन अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। कहने का पर्पस ये है कि फीमेल, चाहे वो लोअर क्लास से बिलोंग करती हों, मिडिल क्लास को बिलोंग करती हों या हायर क्लास को बिलोंग करती हों, मैरिड लाइफ की कंडीशन जो थी आफ्टर द मैरिज, द कंडीशन ऑफ द वीमेन वुड बी सेम एवरीवेयर। The massive weight of uncle's wedding band. The massive weight. Massive here means bulky, भारी भरकम. Weight of uncle's wedding band. Wedding band here refers to the wedding ring. Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Means the poet trying to explain the massive weight, the bulky weight of uncle's wedding ring sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. She has been trapped under the traditions, under the shackles of her husband. It means कि अंकल से उसकी शादी का प्रतीक वो भारी भरकम रिंग जो है, यहाँ जो वेडिंग रिंग जो है उसको एक मेटाफोरिकली उसने यूज़ किया है कि वो रिंग नहीं है बल्कि उसकी शादी का बंधन है। किसके साथ? अंकल के साथ। और ये वेडिंग रिंग जो है उसके हाथ पर और भी भारी बैठती है। मीन्स कहने का पर्पज़ ये है कि शादी के बाद वो इस शादी के बंधनों में बंध कर रह गई है। शी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, शी कुडंट इंजॉय हर लाइफ, शी हैज़ नॉट बीन लिबरेटेड अकॉर्डिंग टू हर डिज़ायर। Now, in the last stanza, when aunt is dead, her terrified hands will lie. What she want to say when aunt is dead means when aunt would be passed away, her terrified hands will lie. पोइट कहती है कि आंट जेनिफर के मरने के बाद भी उसके हाथ घिरे रहेंगे, स्टिल रिंग्ड। रिंग्ड हियर मीन्स रिंग। This word has two meaning. After the death, Aunt Jennifer's fingers would be surrounded with her ring, and second meaning is ringed or engulfed. Which figure of speech here is used? Pun. Pun is that figure of speech in which a word has two meaning. Here the ring word has two meaning. The first one as a ring and second one is surrounded. So what is the irony with the Aunt Jennifer? The irony is that after her death she would not be able, Aunt Jennifer would not be able to liberate herself from the bond of her marriage. Means after her death she would be worried with that ring. ये कहा जाता है कि मरने के बाद स्पेशली इन क्रिश्चियंस कि अगर लेडी जो है, फीमेल जो है वो अपने हस्बैंड के सामने, उसके हस्बैंड से पहले अगर उसकी डेथ होती है तो जिस तरीके से शादी में डोली में बैठ कर आती है, ठीक उसी तरीके से, उसी परंपराओं के साथ उसको दफनाया जाता है। मरने के बाद भी उसको उसी रिंग के साथ दफनाया जाएगा। दिस इज़ आयरनी। द आयरनी इज़ दैट कि आंट जेनिफर जो थी वो अपनी लाइफ टाइम में भी उन्हीं बंधनों से घिरी रही और मरने के बाद भी वो अपने आप को उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बंधनों से मुक्त नहीं कर पाएगी। दिस इज़ द आयरनी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, बट the tigers
in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। लेकिन उसके द्वारा बनाए गए टाइगर, जो उसने अपने पैनल पर टाइगर बनाए हैं, ये ऐसे ही उछलते कूदते रहेंगे, जंप करते रहेंगे, with proud and unafraid, proudly and unafraid। Now this poem has been finished. I hope you would like this poem, and